Okay. So guys, as I've mentioned you that we will be covering certain topics related to cyber security. But prior to this, I hope that कि आपको cyber security क्या है उसके related आपको information रहेगी. अगर नहीं है तो I'll be just giving you a quick overview जो topics हमने last session में covered किए थे. I'll be just going through that thoroughly and I'll be explaining you what exactly that cyber security term means and what are the different domains which are available in cybersecurity, different roles which are there, कौन से roles हैं, cybersecurity क्या है, and what are the different skills required to get a job in cybersecurity, और courses क्या कर सकते हैं, certifications क्या है, वो सारी चीजें हम लोग एक थोड़ा thoroughly देखेंगे. उसके बाद we'll be asking like resolving your queries. Okay. सो फर्स्ट टॉपिक आता है साइबर सिक्योरिटी. सो लाइक हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है एंड व्हाई डू वी रिक्वायर साइबर सिक्योरिटी. सही है. तो साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग बट लेट्स अज्यूम दैट डेटा है. ठीक है. डेटा एक होता है रॉ डेटा. रॉ डेटा इज नथिंग बट विच इज नॉट प्रोसेस्ड. ओके. मतलब कि हमारे घर पे कुछ कुछ डेटा रखा हुआ अनडॉक्यूमेंटेड डेटा. ठीक है. एंड देयर आर सर्टेन डेटास व्हिच आर देयर ऑन द इंटरनेट. कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो इंटरनेट पे होते हैं. We call it digital data. ठीक है. If something is there on internet, then there should be some mechanism to protect those data, right? तो अगर कुछ चीजें इंटरनेट पे है तो हमें चाहिए कि वो किसी तौर पे गलत मिसयूज नहीं हुए. इट शुड नॉट बी एक्सेस अनऑथराइज्डली और अनऑथेंटिकेटेडली. मतलब जिसे यूज नहीं करना है वो उसको यूज कर रहा है. मैलिशियस अटैकर्स आ गए, इंट्रूडर्स आ गए एंड दे आर यूजिंग आवर डेटा. तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा डेटा किसी गलत बंदे के हाथ में लगे. जैसे हमारा लेट्स अज्यूम दैट हम आपका बैंकिंग डेटा है. ठीक है. और बैंकिंग डेटा अगर रहेगा तो आप नहीं चाहोगे जो बैंकिंग डेटा कोई और बंदा आपका बैंक का डिटेल्स वगैरह फैच करे और मिसयूज करे. आपका डेबिट कार्ड डिटेल्स है, जैसे सीवीवी नंबर है, आपका मेन कार्ड नंबर है, तो आप नहीं चाहोगे कि आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कोई और यूज करे. तो ये चीज को सिक्योर करने के लिए इज अ टर्म कॉल्ड है साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी मतलब तुम्हारा जो डिजिटल डेटा है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे. तो लाइक किसके किसके अगेंस्ट अगेंस्ट द अटैकर्स, इंट्रूडर्स, द मैलिशियस एक्टर्स. मतलब जो लोग आपका डेटा चुराना चाहते हैं, विल जस्ट मेक श्योर के दे वोंट बी एबल टू डू इट. सही है. सो साइबर सिक्योरिटी का एक एक मैकेनिज्म है, एक आर्ट है जिसके थ्रू से विल मेक श्योर दैट nobody would be able to misuse the data through unauthorized mean or unauthenticated mean. Okay. अभी उसके अंदर मतलब बहुत सारे डोमेन्स है. जैसे अभी उसके लिए आप मुझे कहोगे कि मुझे लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ क्वेरी दैट सम पर्सन वांट टू परस्यू साइबर सिक्योरिटी. अभी कोई शख्स कह रहा है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है. हाउ शुड आई गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी. सो देयर आर मैंने मोस्टली चार ऐसे स्किल सेट डिफाइन किए हुए हैं कि अगर इफ समबडी इज हैविंग दैट स्किल सेट, अगर किसी के पास वो काबिलियत है, किसी के पास वो स्किल सेट है, तो वो बंदा या वो बंदी अगर जाना चाहता है वो जा सकते हैं. तो फर्स्ट स्किल सेट ये है कि उसको एटलीस्ट मतलब जो लैंग्वेज होता है, कोई भी कोडिंग का लैंग्वेज होता है, जैसे डॉट नेट ले लो या सी शार्प ले लो या तुम्हारा जावा ले लो या पाइथन ले लो, कोई रैंडम नॉर्मल लैंग्वेज उसको आना चाहिए, ताकि उसका एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है. जैसे प्रोग्रामिंग है तो फॉर लूप कैसे वर्क करता है, वाइल लूप कैसे वर्क करता है, डू वाइल कैसे वर्क करता है, एटलीस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. अगर मैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ तो व्हाट इज दैट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म. ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसके कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ताकि जब भी अगर वो कोडिंग देख रहा है कोई एप्लीकेशन का, कोई एपीके का, कोई आईपीए फाइल का, तो ही शुड और शी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर वर्किंग. जो सेकंड थिंग है विच इज नथिंग बट योर एथिकल हैकिंग स्किल्स. एथिकल हैकिंग मतलब ये होता है कि हमारा जो माइंडसेट होता है वो हम हैकर के प्रोस्पेक्टिव से सोच के हम कोई भी वेब एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट कि आपको एक वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए दिया गया है, तो आप उसको कैसे टेस्ट करोगे. वी विल बी थिंकिंग इन सच अ वे दैट द हैकर वुड बी थिंकिंग, राइट. तो हम ऐसा सोचेंगे कि हैकर अगर कैसे मतलब ये हैक कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे. और हम ट्राई करेंगे कि जैसा हैकर हमारे सिस्टम में इंक्लूड करना चाहेगा, मतलब घुसना चाहेगा, तो वैसे ही हम चाहेंगे हम वो सिस्टम में देख सके, देख वेदर वी आर एबल टू इंक्लूड इनटू दैट पर्टिकुलर सिस्टम
a particular operating system or particular environment or not. यानी हम वो सिस्टम में अंदर जा पा रहे नहीं जा पा रहे, हम ब्रीच कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, सिस्टम का सिक्योरिटी ब्रीच कर पा रहे कि नहीं पा रहे. तो we'll be just making sure that we are up to date with the latest kind of attacks and everything is up to date so that the system must be robust and secure. सही है. थर्ड स्किल्स आप जो पोजेस करोगे वो है आपका नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, मतलब कि जो बेसिक नेटवर्किंग स्किल्स होनी चाहिए, विच इज मोर काइंड ऑफ अ CCNA टाइप ऑफ स्किल्स, जो आपको एटलीस्ट नेटवर्किंग क्या है, मतलब कैसे इंटरनेट, कैसे नेटवर्क कनेक्शन एक दूसरे से मर्ज होता है. एंड या नदीम भाई, यू वांट टू से समथिंग? For internet कैसे चलता है, मीन्स if you browse on a internet कैसे, मीन्स आप एक URL डालते हो, what gets into backend और backend पे कैसे इंटरनेट काम होता है, वो मीन्स वो पर्सपेक्टिव से सोचना है आपको. Okay, so do you want me to explain that scenario as well? नहीं, प्लीज कैरी फॉरवर्ड. Okay, fine. So as Nadeem bhai has mentioned that networking in the sense, मतलब network इसको बोलते हैं कि दो कंप्यूटर, दो machines, दो routers, दो net, anything if they both are connected then it's called a network, right? So अगर दो चीजें connected है तो how it is connected, whether it is a server or a client, whether it is a client or a client, server, regardless of how the architecture is, connection कैसा है, कैसा सिक्योर चैनल है या नहीं है, मतलब डेटा ट्रांसफर कैसे होता है. लेट्स अज्यूम दैट आप कनेक्टेड है गूगल से, गूगल के सर्वर से, तो आपका जो कनेक्शन है, आपका जो जो डेटा है, जो कनेक्शन आपका जा रहा है, जो आपका, जैसे आपने कोई पैकेट भेजे, कोई डेटा भेजे, तो हाउ इट इज गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर मीडियम, पर्टिकुलर चैनल, कम्युनिकेशन चैनल. तो वो सारी चीजें नेटवर्किंग में आती है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है. प्रोटोकॉल्स आर नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन के, इसके थ्रू से इसके अकॉर्डिंग ऐसा चलेगा, ऐसा जाएगा, पैकेट ऐसा होके जाएगा, which is like with I don't want to get into that depth of that particular part, but ये ऐसा है कि हमारा आर्किटेक्चर कैसा है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ये आपका स्किल हो गया. देन आपका एक और स्किल आता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आता है, जैसे मैक है आपका, विंडोज है, लाइनक्स है, रेड हैट. लाइनक्स की भी मल्टीपल, वी हैव मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपका काली लाइनक्स है, उबंटू है, रेड हैट है, ऐसा मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस वी हैव. So at least you should have a common understanding, a basic understanding of how the operating system works. So जब भी आपको टेस्टिंग में आएगा तो like right now I'm testing Android, iOS, Mac, Windows, Linux and everything. So मुझे एटलीस्ट वो जो पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको मुझे टेस्टिंग करनी है, तो मुझे एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड मुझे पता होना चाहिए कि इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, हाउ सिस्टम वर्क्स एंड एवरीथिंग. ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं. तो ये चार चीजें बेसिकली आनी चाहिए. अलॉन्ग विद दैट, then there are the skills we have covered. There are different kind of roles which are available. जैसे for example, I am working for a assessment department, जहाँ मेरा role ये है कि I'm testing particular web applications. Web applications हो गया, mobile applications हो गया. Then we call it thick client applications, which are nothing but your embedded application होता है, just like your Outlook, YouTube, जो directly it will get installed on your desktop and accordingly it will be running within your desktop only. Uska entire setup, it is getting downloaded on your system and it will be running on your, and it will just fetch limited information from the server. Uske baad I'm testing thick client, I'm testing operating system. So there is other domain which is which we call it SOC, Security Operation Center. इसके अंदर भी मल्टीपल जॉब रोल्स होते हैं. जैसे नदीम भाई का जॉब रोल है, ही इज अ थ्रेट हंटर. सही है. देन वी हैव अ सॉक एनालिस्ट, जिसका काम ये होता है कि they will be continuously monitoring your environment 24 into 7. They will be having variable chips wherein they will be monitoring your environment. और अगर समझो, लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ इंट्रूडर, जैसे अज्यूम करो एक तुम्हारा कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर कोई चोर आ गया, तो वी हैव सिक्योरिटी गार्ड्स ओवर देयर ऑन द मेन गेट, राइट? सो अगर कोई चोर आता है तो मेन जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपको अलर्ट करेगा कि चोर आ गया है, एंड ही विल जस्ट अकॉर्डिंगली टेक द एक्शन. Similarly, in security, cyber security, we have a SOC department. तो अगर कोई कोई somebody is trying to intrude into our environment, तो वो बंदे को मतलब they will detect it and they will accordingly take alert, generate or create a request and
they will create an alert that somebody has intrude or somebody has like he may get into the system. Accordingly, the other team will be taking the actions. Okay. Nadeem bhai, would you like to add about threat hunter? Yes. So, it has a ईशा भाई ने समझाया कि सॉक कैसा काम करता है। सिमिलरली सॉक के साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एंडपॉइंट सिक्योरिटी होता है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, पैच मैनेजमेंट होता है, और अपना एक कंप्लाइंस रिलेटेड डोमेन होता है, जो आपका आईएसओ वगैरह जो भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है उसका चेक, उसका ऑडिट वगैरह होता है। तो वो एक डिपार्टमेंट होता है। प्लस जो थ्रेट हंटिंग है वो एक नीड स्किल है, जिसमें आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो कि पहले से सोचते हो कि तुम्हारा पूरा इन्वायरमेंट में अटैकर कैसे अटैक करता है, और अटैक कर सोचते हो कि ऑलरेडी अटैक हो चुका है और उसको आपको ढूंढना है, अटैक को ढूंढ के आपको निकालना है। तो वो अटैक को ढूंढने के लिए आपके जो भी आपके इन्वायरमेंट में एंड पॉइंट्स है, जो भी यूजर्स के लैपटॉप्स है, यूजर्स के डेस्कटॉप्स है, यूजर के कंपनी के इन्वायरमेंट के जो नेटवर्क डिवाइसेस है, फायरवॉल्स है, सारे डिवाइसेस के हर एक चीज़ का लॉक्स होता है। मीन फॉर एग्जांपल, अगर कोई आप एक कंपनी की वेबसाइट पे जाते हो, तो वो कंपनी की वेबसाइट को पीछे मालूम है कि आप ये पर्टिकुलर यूजर से, ये पर्टिकुलर आईपी से आपका एक रिक्वेस्ट आया है और उसने ये चीज़ें किया है। तो वैसे ही वो पर्टिकुलर लॉग्स को लेके हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं कि कुछ अटैक्स हुआ है नहीं हुआ है। तो वो एक हाइपोथेसिस रन होती है और उसके बेसिस पे एक ये पर्टिकुलर जॉब रोल है वो एडवांस लेवल पे है। आपको अगर सॉफ्ट में आना है या तो डिफेंसिव पार्ट में आना है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, देन सॉफ्ट एनालिस्ट से चालू करना पड़ेगा। Okay. Okay. So, Jazakallah, Nadeem bhai. So, Nadeem bhai ne jaise mentioned ki there are different multiple domains out there in SOC as well, compliance, audit and everything. So, we have a GRC department as well. So, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मतलब it is quite SOC is very vast. Okay. अभी let's assume that हमारे पास skills है. We have a अच्छा there's a condition that आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री. द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज बैचलर्स डिग्री. At least you should have a bachelor's degree. उसके बाद you can have these skills and accordingly you can get into the particular domain. अभी let's assume that आपको कौन सा कोर्स करना है, ठीक है. जहां से मैंने नदीम भाई ने किया है that particular institute is called as iisecurity.in, which I'm dropping the link into this particular chat box. Okay, it'll be just let me just write it down for you guys. Yeah, and we have done CISC course from here. So it like our course was of three months duration, but let's assume that somebody who's having no prior knowledge of networking and everything, so they can opt it out for 6 months duration. Mohammed, we will be taking the queries after this session. Okay, at the end of this session. So just write it down in the comment, and accordingly we'll be taking note of the same, and we will be reverting your queries. Okay. So जहाँ से हमने किया है, it is called as iisecurity.in. हमने we both had since we both had a knowledge of networking and more kind of we were both were interested in uh, ethical hacking. So we were having that prior knowledge of networking, operating system and everything. That's why we opted for 3 months course. But if you're a fresher and if you do not have that prior knowledge of networking and operating system and any sort of database management system, any sort of things, then you can opt for 6 months course, which is nothing but CIC 6 months. Okay. And talking about different job opportunities in cyber security, तो हमारे जो job opportunities हैं बहुत अच्छी अच्छी opportunities हैं. मतलब we can have n number of opportunities in this domain. जैसे SOC analyst है, जैसे हमने job role mentions किया, accordingly you will be having that particular opportunities in the domain. जैसे आप you can be a SOC engineer, you can be a threat hunter, you can be a VAPT analyst, you can be a source code reviewer. So multiple opportunities out there. जैसे assume करो if somebody is good at programming and he wants to get into cyber security, ठीक है, और उसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज अच्छा है, तो ही कैन बी अ गुड सिक्योरिटी रिव्यूअर, कोड रिव्यूअर. So what they will be providing, they will be providing him
multiple tons of LO line of codes, and accordingly he will be reviewing the code and he will be scanning that code using automated tool और उसको manually review करेगा. सही है. Manually review करना as in मतलब there are automated tool है तो वो आपको false positive answers भी कर सकता है. सो हम ये चाहेंगे जो मैनुअल रिव्यू का मीनिंग ये है कि हम ये डिटेक्ट करें कि भाई दिस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी या लूप होल या वीकनेस या इशू इज जेन्युइन एंड दिस पर्टिकुलर इशू इज नॉट जेन्युइन. सो उसका सिक्योरिटी रिव्यूअर का काम रहेगा, वही रहेगा. सिमिलरली वी हैव ऑडिटर, लीड ऑडिटर, जिसका काम होगा कि भाई ऑडिट करेगा कंपनी में जाके जैसे ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करता है कि नहीं करता है. एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी making a checklist that so and so rules are not followed, so and so checklist is not followed, so and so protocols are not followed. So accordingly we will be making a checklist and we will be generating a report और वो ऐसा generate करके सामने वाली कंपनी को देगा. ठीक है. Nadeem bhai, would you like to add something? And if don't, then we will taking the queries from this guys. Okay. I'm good. Yeah, certifications ka I would like to add. So let's assume that आपको entry level certification चाहिए. तो we have like 2 to 3 certification which you can do and get a entry level job. जैसे एक EC Council का certification है which is called as Certified Ethical Hacker. तो आपको entry level का job के लिए that is sufficient unless and until you do not have a skill set. At least you should have a skill set, and plus along with that you should have a certificate so that you know the process would be quite smoother as compared to the ones who are not having the certificate. उसके अलावा EJPT करके होता है which is nothing but junior penetration testing. The third one which I would suggest is CompTIA Plus का certificate you can apply. These are for the entry level certifications. CCNA, Hussein, CCNA is for networking. So I'm talking about CEH in general, like cybersecurity के लिए. CCNA is for more kind of a networking part, which is your Cisco का certificate, Cisco Certified Networking Associate. If you are having that knowledge is sufficient here. If you are having networking ka knowledge, then it is more than sufficient. If you're going for a networking job, then I would suggest that you should have a CCNA, CCNP, CCIE. The CCIE is the last certificate which you can have in networking, and which is the toughest among networking certificates. Yeah. So guys, you can just shoot your queries and we will be happy to help you out with your queries. Okay. So yeah. Hassan Balsania is having a query. Nadeem bhai, you can take it forward. It is with relates to DFIR and everything. I cannot see your question. Sorry? I cannot see your question in the chat box. Yeah, he's asking me that please explain digital forensics and incident response, DFIR, and what is the roadmap and what skill required in DFI. Okay, so for the DFIR, you should be for the digital forensic incident response. First thing that you should be start your journey with not directly with the forensic, since the forensic is bit intermediate skill required. So if you are into defensive part, start with something called soft and move forward towards forensic, since forensic also required some log analysis skill, plus it's also required the decoding skill, plus also required the embedded language also required over there. So start your journey with the SOC and move towards the forensic, and then you can go with the incident response. Hassan, is your query clear? Like he has actually asked your question, right? Okay, Hassan, I assume that your question has been clear. Okay, the next one is ethical hacker versus cybersecurity. Okay, so Mohammed Bulsani has actually asked me this question. So Mohammed, the thing is, ethical hacking is a kind of, you can assume that it's more kind of a system or more kind of a skill set, which the ethical hacker are nothing but the one who are hacking into a system on a contract basis and or with permissions. Okay, we have black hat, so they are the actual thieves.
So they get into your system. They are basically attackers, okay? And the ethical hackers are called as white hat. जैसे हमारा चोर पुलिस होता है, चोर क्या होते हैं, गलत काम करते हैं और उनको भी पता है कि कैसे, मतलब, और ऑन द अदर हैंड वी हैव अ पुलिसमैन, तो जिनका काम है था सही करना। सो जो व्हाइट हेड्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एथिकल हैकर। जो उनका काम ये होता है कि वो, जैसे अज्यूम करो आई एम द एथिकल हैकर, ओके, और मुझे टेस्टिंग करनी है, तो मैं आपसे परमिशन लेके, आपकी परमिशन लेके मैं आपकी सिस्टम को टेस्ट करूंगा। वेर एज जो आपके ब्लैक हेड होते हैं वो विदाउट परमिशन के जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इज अ डोमेन, बड़ा डोमेन है, उसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स है। इसके अंदर एक डोमेन होता है असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर एक एथिकल हैकर, मतलब बहुत सारे एथिकल हैकिंग स्किल होती है, या मतलब यू आर हैकिंग इनटू सिस्टम एथिकली with due permission, with due contract basis, you're getting into that particular system or you're testing that particular system. Am I clear? Afroz Badra has actually asked me a question. So can you give a roadmap for cyber security for a B.Tech degree? Okay. Okay. B.Tech आपने किया है, so you must be aware of coding language and everything, right? Coding का भी knowledge होगा। B.Tech, uh, could you specify your degree? Like B.Tech किसमें किया है आपने? IT? Afroz, you can unmute yourself. यस सर। सर अभी मैं 12 पास आउट हूँ, अभी करने वाला हूँ सर Okay. बीटेक डिग्री। किसमें कर तो B.Tech? सर साइबर सिक्योरिटी में करना सही रहेगा क्या एकदम, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में? आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है? हाँ सर। ओके, सो आपको अगर जाना है तो, अगर आपको इशू नहीं है तो, लाइक वी हैव डिफरेंट कोर्सेज विच आर देयर, मतलब बहुत चार फोर 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 इयर्स के प्रोग्राम्स है। वी हैव हम्म 4 years program in यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च, लाइक लेट्स से 1-2 साल पहले लॉन्च हुआ है, जैसे डीजे सांगवी में शायद से लॉन्च है। बट इट इज नॉट प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी कोर्स, इट लाइक साइबर सिक्योरिटी अलॉन्ग विद ब्लॉकचेन ऐसा करके कुछ लॉन्च हुआ है। So I'll हम्म just get the necessary details, ठीक है? हम्म But I would suggest that अगर if you do not have any financial issue, then अगर आप, if you are good to go with the B.Tech degree, then go for this cyber security along with the blockchain. क्योंकि अगर आप कुछ और पढ़ रहे हो, अगर let's assume that you want to get into cyber security, तो हम्म, आप कुछ और क्यों पढ़ोगे, उसके रिलेटेड ही हाँ पढ़ो ना, वही। एटलीस्ट somewhat related to cyber security. ओके सर। सर आप And कोई सजेशन दे सकते हो कोई ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई प्रैक्टिस आप हैकिंग? काली पे कर सकते हो। काली इज काली फ्री लिनक्स। open source या operating system. And there are n number of YouTube channels which are there, or Udemy or Coursera पे you will get a number of courses, or simply you can just use Telegram channels to get hands on. आप रोहित गौतम करके एक, there's this guy on Udemy, रोहित गौतम and Shifa Cycle वाला. I'll just write down the name here. One यस second. यू कैन। There is a query related to sales profile in cybersecurity. So you have to check out the product based company of cybersecurity which are providing the products which are creating a product on a cybersecurity, like Symantec is there, Palo Alto is there. So that's the one job role. Other job role is related to the service base, like if you are willing to sell the service to the banking sector, energy sector, pharma sector, then that's also a good role over there. The two things. One is product related, and the second is service related. Okay. So Mohammed, your query is clear, Mohammed Jagrala? No, can you come again? Nadeem, have you taken this query? I have done BCom and also I'm having experience in CSIR and DLP admin and a little in audit part related to DB access EU. Okay, and I'm looking for a job in foreign. Forensic or foreign, like are you going opted? Foreign. Basically, I am looking outside of India. Okay.
So do you have that experience, like what have you done? Like, do you have that experience? See, I am having certification in the CEH and also hands-on experience in the incident response as well as I am a DLP admin. Okay, and how much of experience you're So you holding? can say approx 1.5 year in this, and I was earlier in the IT field, where I am having experience related to the compliance lead and user compliance lead, which is approx nearby 4 years, and also I am having experience more 4 years in the desktop support with the L3 support. Okay, so you are having overall experience of around 10 plus years, right? Yeah, If I assume correct. correct. So what you can do is you can after this session you can get in touch with both any of us and we'll help you out with your query. Like we have a separate group wherein we can share your number and accordingly they will take it forward. Sure, definitely. Okay, Yeah. that would do it. If you could share some insights on sale profile related to cybersecurity, what skills are required? I'm looking for business development and leading my team. Nadeem, this is your take, right? Yeah, I would. So the what level of a tech knowledge is required? So basic knowledge is required. Mostly, if you get into some product-based company, so mostly the trainings are provided over there. Most of the sales guys have a training period they each before they start their job. So the trainings are provided related to the service or related to the product that company you work for. Is Okay. that clear? Virtual box. Hussein, do you want me to add something on virtual box or you just would like to um, mention the free open source things which are there, which was asked by I think Afroz? Okay, please explain red teamer and blue teamer. Okay, so these are like two different teams. Like there are n number of teams which are available. Okay, red teamers are basically the superheroes. You can assume that जैसे हमारा जैसा superheroes होते हैं जिनका काम होता है कि गलत लोगों को लड़ना है गलत लोगों से सही है. सो दे आर ऑन द ऑफेंसिव पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी. मतलब उनका काम ही ये होता है कि जहां जहां से अटैक हो रहे हैं वहां जाके उसको खराब करो. मतलब दे विल ट्राई टू अटैक इनटू अटैकर सिस्टम एंड दे विल ट्राई टू जस्ट put it down the servers and everything which they have set up. तो रेड टीमिंग का काम ही ये होता है कि वो जाके ऑफेंसिव पार्ट में रहते हैं. ऑफेंसिव एज इन वो अटैकिंग मोड में ही रहते हैं. जिससे मतलब दे विल ट्राई टू अटैक द अटैकर्स. They will try to attack the malicious actors who are there to attack your company. और ब्लू टीमर इज ऑन द डिफेंसिव पार्ट. मतलब कि उनका काम है डिफेंस करना. मतलब दे विल जस्ट अप्लाई द मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू देयर सिस्टम एंड एवरीथिंग. सो ये ऐसा हो जाता है मतलब एक ऑफेंसिव खेल रहा है एक डिफेंसिव खेल रहा है. ऑफेंसिव एज इन मतलब एक सिक्स ही मारे जा रहा है और एक नॉर्मल टुक 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 करके खेल रहा है. यू गेटिंग मी हसन? So what level of technology that is covered? Sir, the website you mentioned for cybersecurity course. Yes, yes, yes. Salim, anybody can join that particular course, but I would suggest that कि at least graduation हो जाए उसके बाद आप करो. क्योंकि graduation के एग्जाम देने के बाद आप वेट करते हैं हम लोग रिजल्ट का. तो इट इज मच मोर कन्वीनियंट के आप ग्रेजुएशन के बाद करो सो दैट आपका फ्रेश रहेगा. जब भी आप ग्रेजुएशन का रिजल्ट हाथ में आएगा तभी you will be very fresh and accordingly you will be taking or you will be gaining your interview. तो वो आपके लिए easy रहेगा. But the prior thing is at least you should have a bachelor's degree regardless of which stream from which stream you are. But आपको सिर्फ एक bachelor's degree होना compulsory है. So can you explain what is bug bounty contest and what is freelance option in cyber security field? अच्छा. सो बग बाउंटी में क्या होता है बेसिकली. बग बाउंटी में मतलब मल्टीपल ऑपरेट. जैसे आई एम अ बग बाउंटी हंटर एज वेल एंड फ्रीलांसर एज वेल. सो इसमें ऐसा होता है फ्रीलांसिंग में क्या होता है बग बाउंटी में. आई जस्ट एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ बग बाउंटी. उसमें क्या होता है मतलब मल्टीपल वेबसाइट्स अपने प्रोग्राम कॉन्टेस्ट रखती है या प्रोग्राम रखती है या पॉलिसीज रखती है जिसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि अगर आपने हमारी वेबसाइट्स में कोई बग ढूंढ के निकाला तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू बाउंटी. बाउंटी मतलब इट कुड बी स्वैग्स या पैसा. तो विथ मतलब अगर जैसे जितना क्रिटिकल बग रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा.
सो लेट अस अज्यूम दैट आपने अच्छा बग निकाला L1 लेवल का, हायर प्रायोरिटी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका वैसा पैसा मिलेगा। जैसे अगर समझो उन्होंने मेंशन किया है कि वी विल बी गिविंग यू फॉर L1 लेवल ऑफ बग वी विल बी P1 लेवल भी हम जिसको कहते हैं, L1 आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला है, हम आपको 1,000 रुपया देंगे, तो वो $1,000 या 1,000 रुपया देंगे, अकॉर्डिंगली वैसा कैरी आउट करेंगे। अभी फ्रीलांसिंग में यू शुड हैव अ प्रॉपर नेटवर्क, सही है। मतलब अगर आपके नेटवर्क्स अच्छे हैं और आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो वो आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स देंगे। जैसे जैसे हम कंपनी में टेस्ट करते हैं, वैसे आपको घर पे बैठ के टेस्ट करना है, फ्रीलांसिंग वर्क करना है। और अकॉर्डिंगली यू कैन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डायनामिक पेजेस, जो भी जैसा रहेगा, जितना बड़ा एप्लीकेशन है तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपका क्या बोलते हैं, आप उसका चार्ज कर सकते हो। जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कितना बड़ा एप्लीकेशन है, उसके फंक्शनैलिटीज क्या है, लॉगिन पेज है कि नहीं है, उसका डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली जैसा फंक्शनैलिटी उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हो। आई एम परसुइंग BSc IT कोर्स फॉर 3 years, सजेस्ट मी फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। BSc IT आप करोगे तो you at the end of after completion of 3 years you would be having a hands-on experience on database, operating systems, language skills। तो सिर्फ जो जो नेटवर्किंग का भी कवर हो जाएगा। यू विल बी हैविंग अ कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ACN करके, एडवांस कम्युनिकेशन नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का एक सब्जेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपका कवर हो जाएगा, सही है। तो आपको थर्ड ईयर में वंस यू कंप्लीट योर बैचलर्स देन यू कैन सिंपली ऑप्ट फॉर दिस कोर्स कॉल्ड एज CISC कोर्स। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज गेट इन टच विद नदीम और माई सेल्फ और वुमेन वेलफेयर ऑफिस। what we'll do is there is a particular discount referral bonus which we might be getting। So जो आपका फीस इवेंचुअली थोड़ा कम हो जाएगा, अगर if you're going through from our end or if we are referring your name, then they will be deducting your fees। What are the most common type of cyber attacks? There are n number of attacks. Like if I'm listing you down, then it will take more than 4 to 5 hours। So basically, I would recommend that. Chalo, theek hai. There's an attack called as ransomware attack. Okay, there are n number of attacks, but I'm just giving you a rough example। Ransomware क्या होता है? एक अटैक होता है जिसके अंदर आप समझो कोई गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो PC पे या APK को इंस्टॉल कर देते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारा चिलिया वेलफेयर फाउंडेशन के अंदर एक APK इंस्टॉल्ड हो गया गलती से, which was nothing but your malware or spyware, or you can say that kind of a ransomware only। तो वो क्या करते हैं, तुम्हारा जो तुमको फोन ही यूज नहीं करने देंगे। अगर डेस्कटॉप पे रहेगा तो इट विल तुम्हारा जो जो भी डेटा रहेगा उसका एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट मतलब लॉक कर देना यूजिंग की। फिर अगर आपको वो डिक्रिप्ट करवाना है, वो अनलॉक करवाना है, तो यू हैव टू प्रोवाइड देम रैंसम इन रिटर्न। रैंसम इज नथिंग बट अमाउंट, जितना वो मांगेगा। सो अब वो अज्यूम कर सकते हैं। देयर आर इंजेक्शंस अटैक, स्क्रिप्ट अटैक, malicious, देयर आर breaches happening, a lot of breaches happening। A courses or a free source to understand the basic of us also, if you could, yeah, sure. So for sale purpose, so like even for the sale purpose as well, you'll be requiring a basic understanding of what exactly the data is and what kind of data we are protecting from the malicious intruders or attackers। तो ये चीजें बेसिक चीज के लिए what we'll do is I'll be sharing a link with you shortly in a group, or the like through MWF official channel we will be sharing that particular links, okay। Or what we'll do is I'll just mark your question somewhere, let me just mark it down। Yeah, yeah, I'm not sure who this person is, user, please get in touch with MWF office coordinator, and accordingly we will be sharing the resource। I There will, is a query where, sorry, which query you're talking about? difference between DFIR and threat intelligence. So, DFIR is if you get compromised, then that there is a team which will investigate it. Similar to the if there is any
murder case, there is a forensic investigation, there is a postmortem related to similar to that. There is a DFIR team post compromise. They will investigate. They will try to mitigate that particular threat. And the threat intelligence is before the attack happens. There is an intelligence. There is a sources from a dark web, or there are the multiple threat intelligence sources, open source intelligence, which they provide intelligence related if there is a possibility of your company getting attacked or similar like to that. So it is pre-attack and there is a post-attack. DFI is post-attack and threat intelligence is pre-attack. Ahmed Sajid, okay. I want to go in offensive security, so should I do OSCP or CISSP? So Ahmed, if like as I can see that you are a final year of BSc CS, okay, and basic knowledge of network and security. I also know Python programming language, okay. So what I would suggest is, let's say you should get an entry level certificate first, and these are the intermediate level or advanced level certificate. OSCP, if you're going into offensive security, then I would suggest that you should have a OSC, either OSCP or CRTP. CRTP is your nothing but certified red team professional, which is more kind of a impactful certificate. OSCP is more kind of advanced. So you can, what you can do is first you do CRTP, then you can go for OSCP. It's like step by step. If you're going, then it would be much more easier for you as well. So at least you should have a CEH or EJPT कर लो. उसके बाद you can go for at least you should get into this particular domain. और उसके बाद you can go for CRTP है, RTO है, OSCP, and CISSP is like managerial post के लिए. So it's not necessary that CISSP offensive security के लिए है. ये managerial certificate है. So you can do that this certificate after once you complete your 5 years of tenure in a particular domain, security domain. So उसके बाद आप कर सकते. Network Plus and Security Plus also are also good for entry level. Yeah, Network CompTIA का एक है certificate. You can do that. Anything you would recommend from your end? I would suggest, as I mentioned, CEH for entry level. I'm talking about. At least you should get a hands-on on this particular thing. EJPT. Okay, these are for the entry levels. For CRTP and yeah, OSCP you can do it later on. So which field of graduation is required to enter cybersecurity? अच्छा ठीक है. So basically मैं ये suggest करूँगा at least the least amount is IT रहना चाहिए. BSc IT, ठीक है. BSc CS से भी कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस से भी कर सकते हो सालिम आप, BSc IT से भी कर सकते हो, BSc BCA से भी कर सकते हो, BTech से भी कर सकते हो, MCA से भी कर सकते हो. The least thing is you should have a knowledge of like if you should have a degree in information technology. Okay. So what is two-factor authentication and why it is important? 2FA इसके लिए important है कि let's assume that if I'm having a access to your credentials मतलब आपका यूजर नेम और पासवर्ड का अगर मुझे access है तो मतलब कोई भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. सही है. तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या करता है? अगर समझो कोई अननोन लोकेशन या somebody else is trying to access your account through unknown source, through unknown cell phone, unknown system, unknown device, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या करेगा? एक ऑथेंटिकेशन कोड मतलब एक कोड भेजेगा आपका ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन पे, या अगर अज्यूम करो आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन थ्रू एसएमएस लगाया है तो यू विल बी गेटिंग एन एसएमएस ओटीपी ऑन योर रजिस्टर्ड फोन नंबर. सो वो जो अननोन पर्सन है, हु इज हैविंग, इवन दो उसको आपका यूजर नेम और पासवर्ड पता है, बट जस्ट बिकॉज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है वो आपका लॉगिन नहीं कर पाएगा. सही. ओके. Please increase volume. Okay. How to apply for internship? Salman, उसके लिए at least you should have क्या बोलते हैं, एक सेकंड प्लीज just do not open your video recording, just mute it down. Check out internship. Let's intern LinkedIn. At least you should have a internship, or at least you should have possess the skills required for cybersecurity. So अगर if you have that skill set, तो
सिंपल ये है कि लिंक्डइन पे देख लो, लिंक्डइन पे यू कैन सिंपली सर्च इट आउट, और एल्स यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज नौकरी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंड जस्ट मेक श्योर दैट योर रिज्यूमे इज अप टू डेट एंड अकॉर्डिंग टू द साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल। जो जॉब रोल के लिए हम अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए ऐसे। Is there any AI mainly made for cyber security? As in, like multiple, we have multiple AI available, and as my There will be restrictions since you don't get a response on the script, so there will be the restrictions on that. So of that's course what there that's will be some security applied on GenAI. guys. Anything else? Salman, clear है Salman? Salman Gojaria is my brother, cousin brother. हाँ ईसा भाई। Clear है? अच्छा ईसा भाई, हाँ मेरे को रिज्यूम शेयर कर सकते हो कि कैसा साइबर सिक्योरिटी के लिए कैसा रिज्यूम बनाने का? हाँ हाँ, आप भेज दो, और MWF के उस पर भेज दो, वो मेरे को फॉरवर्ड कर दो, या मुझे भेज दो ना, मैं मैं नदीम आपको को। भेजता हूँ, वो मेरे को मोमन वेलफेयर वाले लोग ने बना के दिए थे, एक छोटा सी। हाँ मुझे भेज दो, आप भेज दो। वो भेजता हूँ आपको। ठीक है। Sir, is there any effect in cybersecurity field because of AI? So basically AI क्या करता है, तुम्हारा जो भी है आपका, जो भी टास्क है वो मतलब इजी कर देता है, मतलब जो हमको, जो टास्क के लिए हमको टाइम लगता था, तो मतलब इफेक्ट तो नहीं बोलेंगे आप, बट हमारा टास्क थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब ऑटोमेशन ज्यादा हो जा रहा है, और असिस्ट करेगा, दैट्स इट। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि इसकी वजह से हमको इशू आएगा, बट ये है कि थोड़ा काम का, जिसको 3 घंटा लगता था उसका भी 1 घंटे में हो जाएगा हमारा काम, सो इट विल जस्ट गिव यू अ क्विक असिस्टेंस, मोर काइंड ऑफ हेल्पफुल रिसोर्स यू कैन से। या रोड मैप फॉर मोहम्मद पल्सन, या कौन सा रोड मैप आप बात कर रहे हैं? मोहम्मद पल्सन है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेरी। Cyber security. I think we have answered that. So what are you doing right now? I'm doing BCA. BCA, na? So you must be in computer application, right? So are you doing it from this Yashwantram University? Mumbai University. We do not have a Bachelor of CA program, है? BCA program नहीं है ना? Second year में हम लोग का फर्स्ट बैच ही है। कौन सा कॉलेज है? मुंबई यूनिवर्सिटी कांदीवली के ये टॉप का जो कॉलेज है, Okay. ऑटोनॉमस। मुझे कॉलेज का से पिंग करोगे आप इसमें, क्या बोलते, चैट बॉक्स में? ठीक है। सो अगर इफ यू आर हैविंग अ BCA, तो BCA में आपका नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग कवर्ड है, आपका कोडिंग कवर्ड है, कि ये श्रॉफ में नहीं है। श्रॉफ आई नो कांदीवली में है, लेफ्ट हैंड साइड। आई जस्ट नीड टू इसका चेक, इसका ये चेक करो आप, एटलीस्ट ये चेक करो, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं रहेगा ये। नहीं हम लोग ने फॉर्म भी भरा था, कॉलेज से आया था। हाँ कॉलेज से ही आएगा, KES में ही आपका एडमिशन है, इट्स इन कांदीवली, और लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव टू टेक बाटा के से लेफ्ट लेना है। बट द थिंग इज, इसका जो है एफिलिएटेड, उधर से ही आपको एग्जाम भी वही देना पड़ेगा, बट आई थिंक यशवंत राव से इसका लिंक टाई अप रहेगा, एटलीस्ट एक बार आप चेक कर लेना उसको। नहीं मैंने अपना HOD से हम लोग की बात हुई तो उन्होंने बोला मुंबई यूनिवर्सिटी ये न्यूज़ को लॉन्च किया, अच्छा इसलिए ठीक, मेरा फर्स्ट बैच ही है, फर्स्ट बैच ओके। ही था। तो अभी आप लास्ट ईयर में हो? नहीं सेकंड ईयर में। ठीक है। सो आपका बेसिक कवर्ड है, मतलब कोडिंग लैंग्वेज वगैरह का, जो भी आपका डेटाबेस का भी कवर्ड होगा थोड़ा, तो यू हैव अ हैंड्स ऑन आप एक्सपीरियंस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल? यस ठीक है। सो वंस यू कंप्लीट दिस BCA, अगर आपको समझो नेटवर्किंग का पार्ट कवर्ड है, कोडिंग का पार्ट कवर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, एवरीथिंग इज कवर्ड, देन द लास्ट स्किल which is required is ethical hacking. So for ethical hacking, I would suggest that you should opt for 3 months course, which is CISC, or it has been renamed to CCA, which is nothing but Certified Cybersecurity Analyst from IIS Institute.
हम लोग का ना क्रेडिट कोर्स होता है, उसके अंदर है ना ये कोर्स भी देते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी है और एथिकल हैकिंग भी है। किसमें? क्रेडिट कोर्स कॉलेज की तरफ से एक आता है क्रेडिट कोर्स, जैसे तुम्हें कोर्स करने का रहता है। मतलब इसमें तो आपका, बहुत सारे जेनेटिक है और भी है। नहीं नहीं, एथिकल आपका प्राइवेट कोर्स है, कैसा है? 2 मंथ्स का ड्यूरेशन, 3 मंथ्स का? और कॉलेज इज का इट? ही टीचर पढ़ाते हैं। नहीं, हम लोग को ना ऐसे क्रेडिट कोर्स जमा करना पड़ता है पूरा ईयर का। तो ना क्रेडिट कोर्स 3 इयर्स में ना 5 क्रेडिट कोर्स जमा करना पड़ता है, जब 5 सर्टिफिकेट। उसमें एक क्रेडिट कोर्स के एक दो क्रेडिट कोर्स वाला एक सर्टिफिकेट आता है, तो हम लोग को ना उसको हर टाइम में ना लेना पड़ता है। तो एक एथिकल हैकिंग में एक साइबर सिक्योरिटी भी सो ये आपका एक सब्जेक्ट है? है। हाँ, जस्ट मतलब, लाइक सब्जेक्ट। अच्छा ओके। हाँ, तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो ना, अगर अगर नहीं ऑप्ट कर, अगर तुमको ऑप्ट करने दे रहे हैं तो वो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रहे तो यू शुड डू अ कोर्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट गिव द इंटरव्यू एंड अकॉर्डिंगली लेट अस नो, विल हेल्प यू आउट। नहीं, मतलब उन लोग जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे वो वैलिड रहेगा नहीं। मतलब मेरा ऐसा बोलना है कि लेट्स अज्यूम दैट 10 लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं एंड वन इज हैविंग अ सर्टिफिकेट, तो आप किसको हायर करोगे? एटलीस्ट द पर्सन हु इज हैविंग अ स्किल सेट एंड सर्टिफिकेट। अभी आप 10 लोगों में आप ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते ना, हु इज हैविंग दिस स्किल। तो व्हाट आई डू, आई बी जस्ट गोइंग थ्रू योर resume, राइट? 10 लोगों के resume के थ्रू आई जस्ट गोइंग थ्रू resume, आई जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू योर resume and I'll just get to know that okay, so and so person has done CEH और 9 लोगों ने नहीं किया हुआ है, तो आई सिंपली नेग्लेक्ट द 9 एंड आई जस्ट टेक इट फॉरवर्ड विद द वन हु इज हैविंग अ सर्टिफिकेट। तो सीएच इज मोर काइंड ऑफ, वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए थोड़ा एक आउटस्टैंड करता है, मतलब कि 10 लोगों के एक अलग बंदा उठ के आता है, करेक्ट है? वैसा, तो इसीलिए हम लोग सर्टिफिकेट बोल रहे हैं। बट अगर एंट्री लेवल जॉब चाहिए और इफ यू आर हैविंग द नेसेसरी स्किल, लेट्स अज्यूम दैट आपकी स्किल सेट अच्छी है, तो आप रेफर इंटरनल रेफरेंस के थ्रू से हो जाता है, कभी कभार ऐसा लग बाई चांस हो जाता है, बट मोस्टली सर्टिफाइड लोगों को प्रेफर करते थैंक यू। हैं। और किसी को कोई इशू, किसी का क्वेरी? ईशा भाई, आप लोगों से कैसे बात करूँ मैं डायरेक्टली? तो कौन आपका नाम? मोहम्मद जगराला। अब आप वुमेन वेलफेयर का नंबर है आपके पास? किसका? वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन हाँ ऑफिस है। का? और हाँ उनको है। उनको पिंग कर दो ना, तो दे विल बी गिविंग यू द नेसेसरी कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो आपसे कोऑर्डिनेट करूँ या नदीम भाई से कोऑर्डिनेट करूँ? आप कोऑर्डिनेट कर लो किसी से भी, जो whoever is available they will help you out। श्योर। ठीक है, हम्म। ओके। और और किसी का कोई क्वेश्चन? Okay, guys. So I think we shall conclude this call now. Just in case if you guys are having any issues with relates to cybersecurity, then you can reach out to our Movement Welfare Foundation's official contact number, and we will be happy to help you out. Okay. Thank you guys for joining the call, and have a great Sunday. ठीक है ठीक ईसा है भाई ईसा और नदीम भाई, भाई, भाई आपने आपने अपना अपना मतलब मतलब कि कि कीमती वक्त वक्त दिया हमें। दिया आपके आपके बहुत 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 जजाकल्ला जज़ाकल्लाह आप आप दोनों दोनों को। को। और और इसी इसी तरीके से तरीके से हम हम नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन के सेशन के लिए लिए भी आपकी आपकी इस खिदमत के खिदमत के लिए लिए मुंतजिर हाजिर रहेंगे। रहेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम अभी हम इसको इसको वाइंड अप वाइंड अप करते करते हैं। हैं। और और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको इसको रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्डिंग भी किया है। किया है, और और जिसको जिसको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चाहिए चाहिए वो वो MWF MWF से से कांटेक्ट करे। कांटेक्ट करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको एक उसको दो एक दिन दो में दिन में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेज दिया भेज जाएगा। दिया जाएगा। और और इसको इसको यूट्यूब पर यूट्यूब भी पर हम भी हम लोग लोग जो जो MWF MWF की यूट्यूब की यूट्यूब की चैनल है चैनल है, वहाँ पर वहाँ भी पर भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपलोड कर अपलोड कर देंगे, देंगे। तो आप तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट वहाँ से वहां भी से एक भी दो एक दिन दो के दिन के बाद बाद देख देख सकते हो। सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब हम अब उसको हम वाइंड उसको अप वाइंड कर अप देंगे। कर दें। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।